I'm Jagdish Manglani. I'm into schools. We manage a chain of schools by the name of Dolphins International School, and I. This is the website. I mean, this is the website we have. This got created out of Sanjeev sir's teachings, how to create Google website. So earlier we had some agency take care of this, but now we are doing it in house. So this And is you were earlier using WordPress, right? yes. Earlier we were using WordPress. Now it's all Google website. So And we have started getting inspired by you. So we are giving coding classes to grade 1 till 10th, very and we have nice. tied up with alumni of IIT, NIT, Google, and Intel. So they are like giving coding classes to 1 to 10th. So this is because of you that we thought we must give it to the, what we learned must be given to the next generation. So that's how it came up. Right. So, so how I'm using this, okay. So first of all, in this you'll see we have all the branches here. This is a school prospectus. It's also here. So not everybody needs to buy this. You can fill online the form and the details. So you And made it online yes, instead of people needing to physically get it. yeah. When they join, finally they have to fill up and sign those forms. But then initially for registration, because there may be a limited seats in certain classes, so the first come first serve is taken care of. Now this is a contact us form. If you fill it up at the same time because of this formule, you get the response. So that's a good thing. People feel we have taken care of them immediately. इसमें जो सबसे अच्छी चीज है इंटरनेट इज देयर. If I go here, so this is a window to all my staff. They can access this. सब Google उस पे हैं. सबका मतलब GWS का ecosystem है. Now this is my personal page. I go to this GM. So in this this is my calendar as per me by default. This is the calendar which my EA sets for me. कोई appointments होते हैं यहाँ दिख जाता है. So I'm, by default, this is my calendar. This is by my EA. Any changes I come to know. So these are the things I'm supposed to be doing today, later, the calls I'm supposed to be making today. Then this is the task that I've delegated to people. So this is the new task delegation, right? Yeah, WAB delegation. And these are the tasks which I've delegated to myself. So this is something beautiful like this. This I can see on my internet window. And every day I come to this page and work from here. Now, if I want to see how many admissions we have done, what is the collection for the each center as of now, I can see via this. Like this gives me, this is the data studio. This gives me how many student admissions we have done, how much collection has come so far. So this is for all the centers combined. So different centers, each center has different thing, and we come to know what is the tally of centers and how many admissions are happening. So all these details come on single page. मतलब all dashboard is in one place, right? Yes, even for my book sets, if I want to see कितना सेल हो गया, कितने बुक सेट्स बिक गए हैं, कितनी यूनिफॉर्म्स बिक गई हैं. So this gives me data on that. So this is something really beautiful. Earlier we were dependent on people कि बताओ क्या status है. Now we don't need to ask anyone. We just need to look at this. तो आज का status आज ही पता चल जाता है. Like this is a sale that has happened for books till now, so we can see and understand how things are moving in the organization. So that's very interesting. Yeah. So सारा कुछ आप देख रहे हैं जैसे कहते हैं ना मैं single dashboard में आ गया तो now he doesn't have to worry and you can access it from anywhere, right? yeah. So this is any sheets which are important to me. We put it here like school में भी कितनी capacity है, कितने बच्चे बैठ सकते हैं. मतलब we created one floor in the COVID. So अभी we filled it up this year and now we are thinking of building one more floor. Next year maybe we have to do with this. So this gives you a clear idea as to how we need to move ahead. So this is something really beautiful that came up in COVID time with Sanjeev sir. So
Thanks to you, sir. This is a beautiful help. And Jagdish, overall, like in terms of amount of time it used to take you, कि जितना टाइम आपको लगता था मैनेज करने के लिए पहले टेक मास्टरी से पहले और अभी में कितना फर्क आ गया होगा? तो टाइम तो बहुत कम लगता है अभी, लेकिन मजा बहुत आता है। मतलब यू फील इन चेक ऑफ थिंग्स, आपको दिखता है कि आपका भी क्या पोजीशन है, स्कूल कैसा है, क्या है, सब दिखता है। पहले डिपेंडेंसी बहुत थी, मेन चीज इसमें है कि अभी डिपेंडेंसी खत्म हो गई है। मतलब यू फील फ्री, यू फील लाइक आई कैन डू इट माई सेल्फ। वो वाला जो कॉन्सेप्ट, वो कॉन्फिडेंस है ना, वो पहले नहीं था। पहले ये था कि ये काम मुझे नहीं आता है, उनको आता है, उनसे पूछना पड़ेगा, वही तो बताएंगे, उन्हीं को तो आता है, मुझे कहाँ आता है। राइट। वो फीलिंग होता था, मतलब लगता था मतलब आप ऐसे बिजनेस में थे जब पता ही नहीं कि क्या होता है। जो प्रिंसिपल बोलेगी, जो एकेडमिक कोऑर्डिनेटर्स बोलेंगे, यू सिंपली हैव टू डू इट। राइट। हमने एंड नाउ सिस्टम बना दिया है। मैं सबको एक रीसेंट एग्जांपल बताता हूँ, अभी क्या हुआ। अभी के इतने सारे नए एडमिशन हुए तो बच्चों को पहचानना मुश्किल हो जाता है। छोटे बच्चे किंडरगार्टन में पहचान भी नहीं आते कि कौन सा बच्चा कौन सा है। बच्चे से पूछो तुम्हारा नाम क्या है, मेरा नाम डिट्टो है। डिट्टो है, अच्छा डिट्टो तो पेट नेम है, एक्चुअल नेम क्या है पता नहीं। बच्चे के बैग में देखो तो कहीं नाम नहीं लिखा है। आईडी कार्ड अभी इशू हुए नहीं है। सो ये इशू हमें काफी दिक्कत आई थी इसका। तो हमने क्या किया, इसमें एक गेट पास सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। इसमें क्या होता है कि कोई भी बच्चा चला जाता है उसको हम लोग गेट पास इशू कर देते हैं। सो वी कम टू नो अभी इस समय रियल टाइम में कितने बच्चे स्कूल से जा चुके हैं। मतलब कई दफा जैसे बच्चे बस में बैठाते थे ना, तो दो तीन बच्चे मिलते नहीं थे कि बच्चे कहाँ गए, पता नहीं। मतलब सब लोग स्कूल में ढूंढते बच्चे कहाँ गए, बच्चे कहाँ गए। मालूम चला उसको तो पापा लेके चले गए। क्यों लेके चले गए? क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी या जल्दी जाना था, कुछ भी था। तो हमने ना ईआरपी को यूज किया, जो फीस का था ना, उसी को यूज किया। एंड उसी में से डेटा उठा के ये बच्चे हैं जो लोग लेके गए। क्यों लेके गए? पेरेंट्स रिक्वेस्ट, नॉट वेल, पेरेंट्स रिक्वेस्ट, ये लोग जल्दी लेके चले गए। तो ये ओके। रियल टाइम में लिंक है जो हमने स्टाफ को दिया हुआ है, बस वालों को भी दिया हुआ है, मतलब कम्यूटिंग इंचार्ज को। तो वो कभी भी, मतलब बस में मान लो 40 स्टूडेंट्स बैठने हैं, 38 हैं तो दो नहीं आए, तो लिंक को क्लिक करते हैं, उनको दिख जाता है ये दो बच्चे जा चुके हैं। नाउ दे डोंट नीड टू आस्क एनीवन बच्चा कहाँ है, उनको पता है बच्चे जा चुके हैं। सो वो गाड़ी चली जा रही है। अदरवाइज के वो कंफर्मेशन ऑफिस से होना, वो दो बच्चे कहाँ गए, ऑफिस वाले कहते थे हाँ वो जा चुके हैं, तो बस जाती थी। अब किसी से पूछना नहीं पड़ता, बस वाले खुद ही देख लेते हैं बच्चा है या नहीं है स्कूल में। सो दिस इज समथिंग ब्यूटीफुल दैट केम अप इन लास्ट 1 वीक। सो अप्लाइंग एमआईएस एट लॉट ऑफ प्लेसेस। तो ये गेट पास भी पहले मैनुअल बनते थे, अब क्या ये प्रिंट हो जाता है। इसमें पेरेंट भी साइन करके जाता है कि मैंने बच्चा ले लिया आपसे, वो गेट पे देता है, तभी वॉचमैन जाने देता है। एक कॉपी ऑफिस में आ जाती है। पहले एक ही बनता था, गेट पे होता था मैनुअल, अब ऑटोमेटेड है, ये अपने आप निकलता है। और उसमें पेरेंट साइन करेगा, ऑफिस कोऑर्डिनेटर साइन करेगा। तो एक गेट पास गेट पे होता है, एक ऑफिस में होता है। तो एनी टाइम यू वांट टू आस्क बच्चा कहाँ पे है, तो या तो लिंक को खोलो या ऑफिस में इंटरकॉम पे पूछो, तो उनके पास एक डेटा होता है, दे कैन टेल यू बच्चा जा चुका है। सो दिस इज समथिंग ब्यूटीफुल दैट हैपेंड लास्ट वीक। वेरी नाइस। तो ये हर एक चीज का एक प्रॉपर सिस्टम हो गया, मतलब एंड यू आर कॉन्फिडेंट कि मतलब आप अगर वहां नहीं भी बैठे हो तब भी ठीक से चल रहा है, राइट? हाँ, वो पहले कॉन्फिडेंस कभी नहीं था, अभी है। अभी पता है कि क्या हो रहा है स्कूल में। तो दैट इज समथिंग रियली ब्यूटीफुल दैट हैपेंड इन कोविड।